इस वाली वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टेक न्यूज़ के बारे में, जो भी लेटेस्ट टेक न्यूज़ है। तो स्टार्ट करते हैं वन प्लस से। वन प्लस अपना नोट 5 और नोट E5 को लॉन्च करने वाला है, साथ ही साथ वो वन प्लस बड्स 4 को भी लॉन्च करेगा। तो जल्दी से नोट 5 का जो स्पेसिफिकेशन है ना, जो हाईलाइट है, उसको एक बार देख लेते हैं, क्योंकि नोट CE4 का इन्होंने कुछ ऐसा स्पेसिफिकेशन साइट पे मेंशन तो करा नहीं है। तो एक बार नोट 5 को देख लेते हैं। तो इन्होंने 3 बेसिकली हाईलाइट यहाँ पे मेंशन करी है कि जो यहाँ पे हमारा प्रोसेसर होगा वो स्नैपड्रैगन 8 सीरीज़ का होगा और उसमें बेसिकली 8S Gen 3 मिलने वाला है। उसके बाद जो ये लोग बोल रहे हैं कि इसके अंदर आपको कैटेगरी की लार्जेस्ट VC मतलब वेपर चैम्बर कूलिंग मिलेगी आपको, राइट। और यहाँ पे 144 आपको यहाँ पे FPS मिलने वाले हैं। ये BGMI और CODM के बारे में बता रहे हैं, ऑलराइट। तो अब नोट CE5 को देख लेते हैं। इसके बारे में कुछ एज सच इन्होंने स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। बाकी जो बैक लुक अगर आप देखोगे तो वो कुछ इस तरीके के दिखते हैं ये। तो अभी कैमरे के बारे में और जो भी इसकी स्क्रीन के बारे में कोई ऐसी स्पेसिफिकेशन आई नहीं है, बट दिस इज़ मोर लाइक अ लॉन्च अपडेट, तो वो मैं यहाँ पे कवर कर रहा हूँ। इसके बाद जैसे भी इस पर कोई इन्फॉर्मेशन आएगी मैं एक नई वीडियो बनाऊँगा, आप चैनल सब्सक्राइब कर लेना। वन प्लस बड्स 4 भी ये लोग लॉन्च करने वाले हैं। तो इसके अंदर 6mm का, ऑलराइट, सो दिस इज़ इंटरेस्टिंग। ये लोग यहाँ पे 6mm का ट्विटर दे रहे हैं और 11mm का वूफर दे रहे हैं, राइट। सो आई थिंक दिस कैन साउंड प्रिटी डिसेंट, बट अब देखने वाली बात ये होगी कि ये किसको किस प्राइस पॉइंट पे लॉन्च करने वाले हैं। और इसके अंदर अगर हम इसके अंदर ओके LHDC 5.0 का भी सपोर्ट है। बेसिकली इसके अंदर जो स्ट्रीमिंग करोगे आप ऑडियो को, तो उसमें मतलब जो बिट रेट आपको अच्छा मिलेगा, या फिर जो सैम्पल रेट होगा, या फिर जो आपकी डेप्थ होगी वो बेटर होगी, राइट। उसके बाद यहाँ पे जो इमर्सिव 3D स्पेशल ऑडियो है, ये उसको अभी सपोर्ट इसके अंदर लेके आ रहे हैं। तो बात अब ये होगी कि ये किस प्राइस पॉइंट पर लॉन्च हो रहा है, और देन ओनली इट विल मेक सेंस इसको ख़रीदने में, राइट। तो अभी जैसी इस पर इन्फॉर्मेशन हो रहेगी मैं इसको कवर करूँगा, आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ, जो है मेटा की तरफ से। तो मेटा और ओक्ले एक स्मार्ट ग्लास को लॉन्च करने वाले हैं ऑन जून 20, मतलब 3 दिन में। तो अभी क्या उसका डिज़ाइन होगा, किस तरीके का होगा, कुछ पता नहीं है, बट ऑब्वियसली दिस इज़ मोर लाइक अ रेबन, और जो मेटा का इंटीग्रेशन है उसी तरीके का कुछ होने वाला है। बट क्या है वो जैसे ये लॉन्च होंगे तो मैं उस पर एक और वीडियो बनाऊंगा फिर, एंड देन वी विल टॉक अबाउट दैट, राइट। सो दिस इज़ जस्ट लाइक अ डिफरेंट ब्रांड के साथ जो मेटा इंटीग्रेट कर रहा है, बट इट विल बी इंटरेस्टिंग कि वो कुछ नया लेके आ रहे हैं उसमें कि नहीं लेके आ रहे। जैसे कि आपको पता होगा कि जो सैमसंग है वो गैलेक्सी वॉच 8 सीरीज़ को बेसिकली लॉन्च करने वाला है जुलाई के अंदर। तो ये लोग बोल रहे हैं कि वो स्क्विरकल करके जो हमारी शेप होती है उसको इंटीग्रेट करने वाले हैं, मतलब वो स्क्वायर भी होगी और सर्कल भी होगी। तो स्क्वायर और सर्कल का मिक्स जब तो बनेगा तो उसको स्क्विरकल बोलते हैं, राइट। तो ये कुछ रेंडर्स हैं बेसिकली, उनको देख लेते हैं। ये गैलेक्सी वॉच 8 के लिए है, एंड दिस इज़ गैलेक्सी वॉच 8 क्लासिक, और ये गैलेक्सी वॉच 8 अल्ट्रा विच इज़ 2025 वर्जन एज वेल, राइट। मेरा पर्सनल प्रेफरेंस इस वाली शेप की तरफ ज़्यादा है दैन कम्पेयर टू एप्पल वाला, वो बहुत ज़्यादा स्क्वायर लगता है, राइट। सो दिस इज़ मोर लाइक अ ना ही प्रॉपर सर्कल ना ही प्रॉपर स्क्वायर। सो दिस लुक्स रिलेटिवली बेटर कंपेयर टू एप्पल वॉच अल्ट्रा, और जो स्क्वायर शेप होती है एप्पल की उसके कंपैरिजन में। और एक फ़नी चीज़ हो रही है कि जो विंडोज़ 11 का जो स्टार्टअप साउंड है ना, कुछ लोग बोल रहे हैं कि वो विंडो विस्टा की तरह आ रहा है। तो पहले लोगों को ये लग रहा था कि ये कोई ईस्टर एग है, बट ऐसा कुछ नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट ने बोला है कि दिस इज़ अ बग, और आई एम नॉट श्योर कि ये मतलब इतना कोइंसिडेंटली क्यों हुआ, क्योंकि कुछ लोग बोल रहे थे कि जो लिक्विड ग्लास एप्पल ने लॉन्च करा है दैट लुक्स लाइक विंडोज़ विस्टा। और एंड ऑल द मैक लवर्स एंड एप्पल लवर्स बेसिकली, जो iOS 18.6 एंड macOS 15.6 का जो बीटा है वो ऑलरेडी अवेलेबल हो चुका है। तो उसके अंदर कोई एज सच मेजर न्यू फीचर्स तो ऐड नहीं होंगे, बट जो भी बग्स हैं या फिर कुछ सिक्योरिटी पैचेस हैं उनको दे आर सॉर्ट ऑफ पुशिंग टू द पीपल, एंड इफ़ यू वांट यू कैन प्रॉब्ली hold on for now until it is stabilized, and then you can download it if you want to. And guys, जो Huawei कंपनी का Pura 80 अल्ट्रा फ़ोन है, आई एम नॉट श्योर हाउ टू प्रोनाउंस इट, बट इट इज़ Pura 80 अल्ट्रा जो फ़ोन है उसके मतलब एक तो ये हमको इमेजेस दिख गई हैं, मतलब दिस विल प्रॉब्ली लॉन्च इन दी चाइना, राइट। तो ये वाला जो फ़ोन आप देख रहे हो दिस इज़ Pura 80 अल्ट्रा, इसके जो कैमरा सैम्पल्स है वो भी आ गए हैं, और ये पीछे से देखने में बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है। इसकी जो कैमरा शेप है और वो सारी चीज़ें, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, राइट। वीवो के साथ आप इसका कंपैरिजन देख सकते हो, ये साइड से देख सकते हो आप, ये आप इसका कैमरा बल्ज भी देख सकते हो, राइट।
तो अब एक काम करते हैं, अब इसके ना कैमरा सैम्पल्स देख लेते हैं। और ये वाला जो फ़ोन जो मैं बता रहा था आपको, दिस इज़ Vivo X200 Ultra। ये जो आप फ़ोटोज़ देख रहे हो, आप यहाँ पे नीचे उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो भी देख सकते हो कि ISO कितना था या फिर कितने mm पे इन्होंने खींचा है, कितना अपर्चर का साइज़ था, तो वो सारी चीज़ें। एंड दीज फोटोज़ आर लुकिंग सुपर सुपर अमेजिंग, राइट। आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो स्काई का कलर है, जो सैचुरेशन है और जो बैलेंस है, वाइट बैलेंस, और जो डायनामिक रेंज है वो उसको एकदम अच्छे से कैप्चर कर रहा है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट फोटो। ये रात का सीन है एंड दिस इज़ अमेजिंग। दिस इज़ क्लिक्ड ऑन 24 mm एंड दिस अपर्चर इज़ 1.6, राइट, और ISO 800, but this is looking very nice. I'm not, because these are not high resolution photos, so I'm pretty much sure कि इसको zoom करके देखने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा, but still अगर आप high level पे देख रहे हो तो they are looking very crisp, right? This is looking very nice as well and this photo is looking very balanced to me, मतलब ऐसे कहीं पे over exposure ऐसी कोई चीज़ नहीं दिख रही। एंड जो डायनामिक रेंज है वो भी बहुत अच्छे से कैप्चर करी हुई है। आप यहाँ पे देखो, ये जो पीछे वाले पहाड़ हैं, दे आर लुकिंग लाइक बैलेंस्ड इन द फोटो इटसेल्फ एंड दे आर विजिबल एज वेल, राइट। ये फिर से एक रात का शॉट एंड दिस इज़ लुकिंग अमेजिंग। आप यहाँ पे डेप्थ भी देख सकते हो। दिस इज़ क्लिक्ड ऑन 89 mm, दिस इज़ नाइस। अगर इसके कैमरा सेटअप के बारे में बात करें तो इसके अंदर 1 इंच का मेन सेंसर है, राइट, जो 16 डायनेमिक लेवल्स के साथ आता है, और साथ ही साथ इसके अंदर पहला स्विचेबल लेंस है जो कि 1.28 इंच mm सेंसर के साथ आता है, इंच सेंसर के साथ आता है, नॉट mm, राइट। और अगर इसकी बारे में बात करें तो दिस इज़ अराउंड 10,000 yuan, विच इज़ लाइक $1,400, तो लगभग हो गया लगभग 1,20,000 के आसपास, राइट। अब एक काम करते हैं, इसके ना थोड़े से विजुअल्स देख लेते हैं। आई मीन दिस इज़ लुकिंग वेरी वेरी यूनिक इन अ वे। इसका जो सेंसर है दैट इज़ नाइस, बट इसका जो अपर्चर है वो रिड्यूस कर दिया है, तो प्रोबेबली रात के टाइम पे जो वीडियो रिकॉर्डिंग या फिर आप फ़ोटो खींचोगे, मतलब ऑब्वियसली हम तो नहीं खींच सकते बिकॉज दिस विल लॉन्च इन चाइना, बट कंपेयर टू आई थिंक ओप्पो X200 Ultra, रात वाली जो फोटोग्राफी होगी इसके अंदर, दैट वॉन्ट बी दैट मच गुड कंपेयर टू दैट। बट आई थिंक इसके अंदर ना एक यूनिक कैमरा सेटअप है, तो अगर आप चाहते हो तो मैं इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बना सकता हूँ। एंड दैट इज़ यूनिक बिकॉज इसका जो कैमरा सेंसर की जो प्लेसमेंट है वो किस तरीके से करी गई। अब आप ये देखो, इस वीडियो के अंदर दिखाया जा रहा है कि जब वो स्विच कर रहा है तो यहाँ पे देखो आप, राइट, ये कैमरा मूव हो रहा है, राइट, इसका जो लेंस है वो मूव हो रहा है, राइट। सो दिस इज़ वेरी यूनिक। अगर आप चाहते हो तो मैं इस पर वीडियो बना सकता हूँ। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। देयर इज़ अनदर न्यूज़ कमिंग फ्रॉम एप्पल विच इज़ कि एप्पल वॉच अल्ट्रा 3 विल फाइनली लॉन्च आफ्टर 2 years। एंड नॉट जस्ट एप्पल वॉच अल्ट्रा 3, उसके साथ साथ जो एप्पल वॉच 11 है दैट विल ऑल्सो लॉन्च, राइट। तो they are saying that this will launch alongside the iPhone 7 lineup, so it'll be interesting to see कि क्या अपडेट करें उन्होंने बेसिकली 2 साल के बाद दोनों घड़ियों में। सो इफ़ यू आर इनटू Minecraft and you like playing, so there is a news for you that Minecraft is bringing vibrant visual UI update, and they are also saying that they are bringing massive visual overhaul for over 3,000 lush new textures, which is interesting. And you can see that this picture here shows how it will look with and without vibrant visuals turned on and off, right? And here is a quick video we can see. Basically it will show you how it will look with the vibrant visuals off and vibrant visuals on. So let's watch it together. So this is vibrant visuals off and this is vibrant visuals on. Okay, nice. Let's watch more of it. So it seems like there are more reflections and the textures and the objects will be more responsive to the light, and the light will change basically more based on the movement. Basically we'll see different light from a different angle, and that will sort of make it more real like. And I also read that they want to keep the original essence of the Minecraft as well, so they are not doing a whole lot of change, but obviously they are bringing some UI changes. I think it's a good thing, right? So here you can see, and this is looking amazing in the night. Light changes everything, right? Looks nice to me, not bad. But see, I was talking about that movement pace change, right? Here you can see that here when they're moving the player, it's changing. So that thing is there, and this is vibrant visual on. I feel like when the vibrant visual is off, then it is more sort of saturated, but now they are sort of trying to bring the light based reaction to the objects, more shadows and more reflections,
that thing. Here is an interesting news about the PS3 emulator. So this is the name of the app, which is APS3E, and this can basically run PS3 games because this is PS3 emulator, of course. And this app is still in the active development, but this can play most of the games, and you may get some crashes while playing some of the games, but this can be your next favorite if you are into PS3 games. So do check this one out. Another interesting news about the Apple terminal, which is getting colorful because macOS will get a new update, which is macOS Tahoe, which is macOS 26 in a way. And let's talk about the Windows as well when you're talking about macOS. So Microsoft Windows will not support facial recognition in the darkroom, and this is because of some security features. So they thought that we should disable that, and they did it, right? So you won't be able to use Windows Hello in the darkroom, and there's a workaround for that. So this is what they wrote here, that you can disable the webcam in the Windows 11 device manager in order to use the Windows Hello in the darkroom, but that will cause problems while using the Windows call. I'm not really sure if this should be the case, because you can then enable the webcam in the device manager after logging into the into your Windows, right? So but this is what they wrote here. So but this is an interesting thing to know. Another interesting news of the Pixel 10 and its rumored telephoto camera. So basically the crux of this news is that the Pixel 10 will use telephoto lens as its macro lens as well, which will help in getting better macro like photography. So this is there, and there won't be a major design change in the Pixel 10 as well, so this will be interesting. Google search is testing audio overview. So basically if you are searching something on the Google and then instead of reading it you want to hear it, so that's how it will look basically, right? So let's say you search for was there a Google indexing drop in the late May, and then instead of going through everything you can just simply click and listen to it, which I think is a very interesting thing if you're not in hurry, but I'm not really sure how much helpful it will be for searching something basically, right? It can work for some cases, but for others it won't. And I feel like this can be useful as well in some scenarios where, for example, Google started to do the summarization of the text result as well, right? So that's where it can be helpful. For example, if I show you, let's search for which is the beautiful city in India. So here you can see this is the AI overview, right? So I search for which is the beautiful city in India, and here you can see this is the AI overview of that. So just like this, here we don't have this option because we are in India right now and they are rolling this out in the US, but here you can see that this is basically giving us the AI overview, and we'll have a button here as well. Many cities in India, but right now this is a different thing. This is not the summarization, right? So we will get this thing here as well, AI audio overviews. Now the next news is about Xbox, and basically we are getting another price update and they are increasing it basically. I'm not sure how this will impact Indian users and if it is right now only happening for the US, but so this thing is coming, and in response to that Sony is also trying the same thing. So they're saying that we may also increase the price because more people are only choosing the higher tires. So they are like, now we see that ज़्यादा से ज़्यादा लोग केवल higher tires use कर रहे हैं, तो why not increase it and probably add some other features as well, right? So guys, this was about the tech news. I'm really interested about this OnePlus Nord 5 as well as OnePlus Buds 4. I will be doing the analysis of this thing when it comes out, right? So please subscribe to the channel and let me know if you liked this tech news kind of thing, and what do you want me to improve, or like what other things you want me to include in this thing. So do let me know about that. And I will be doing a giveaway of Amazon coupon of 500 if this video will reach 100 likes, right? So how can you participate in the giveaway? You just have to follow these basic rules which you can see on your screen. So basically it is, you have to subscribe the channel, you have to comment, and you have to like, right? And
In the next video I will basically choose the people, those who commented and those who are subscribed on the channel, and I will pick a random winner, and then after that I will call your name out in the next video, and I will just give that Amazon coupon to you, basically Amazon voucher. So just a way for me to give thanks to you. So please subscribe and please do the comment and all those things, right? And I'll pick the winner in the next video. So thank you so much.